Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 7 cubes and cube roots. In our last class we discussed what are cube numbers or perfect cubes and how to examine whether a given number is a perfect cube or not. Today we are going to do exercise 7.1 based on all this. So be ready with your pen and paper and do the questions as we do here. So the first question from exercise 7.1, here it is. Which of the following numbers are not perfect cubes? So here some numbers have been given to us and we have to examine whether these numbers are perfect cubes or not. And how do we do this? Yes, first we find the prime factors of the given number. If these prime factors occur in groups of 3, then we say that the given number is a perfect cube, otherwise not. So let us begin with the first number, which is 216. Let us first find its prime factors, write down the number, draw these lines and we begin the division by 2. 2 ones are 2, then we have 1 in between which is a smaller number than 2. So we bring one 0 in between and 2 8s are 16. Let us see this division separately. 216 को हम 2 से divide कर रहे हैं. 2 ones are 2, remainder is 0, copy down this 1. Now 1 is smaller than 2, तो अब हम 2 को 0 से multiply करेंगे. 2 zeros are 0. Again 1 is the remainder. Then 6. It's 16 and 2 8s are 16. So here we get the answer as 108. और आप में से कुछ students इसको 18 लिख कर आते हैं, तो ये wrong है. इसकी we will be getting the answer as 108 and not 18. Remember this. Next again dividing by 2 we will get 54, again by 2, 2 2s are 4, 7s are 14, then by 3 9 times, 3 3s are and then 3 1s are. Let us write down here the prime factorization of 216 is, we will see that here we are having 3 times 2, so 2 into 2 into 2 and again 3 times 3. Let us form the triplets. ये हो गया first triplet, this is the second one and yes, both these factors are appearing in groups of 3. Triplets हमें मिल रहे हैं और इसलिए ये number 216, it is a perfect cube. Let us write it here. Both the prime factors two and 3 appear in groups of 3. Therefore, 216 is a perfect cube. And can you tell me which number is there whose cube is 216? Yes, it's 6 cube. 6 cube is equal to 216. And just make it clear in your mind, we read this expression as 6 cube. ये जो power 3 है, इसे हम क्यूब करके रीड करते हैं. If we have the expression say 6 raised to power 2, we read it as 6 square. तो जब भी पावर 2 होगी हम उसे स्क्वायर रीड करेंगे और पावर 3 होगी तो हम उसे क्यूब रीड करेंगे. Make it clear in your mind. Now we move towards the second number. It's 128. Again, first we find its prime factors. Start the division by 2. 64. Again by 2, it will go 32 times. Again by 2, it will go 16 times. Then 8 times, 4 times, then 2 2s are 4 and in the end 2 1s are 2. So the prime factorization of 128 is, how many 2s are there? 1 2 3 4 5 6 7. Let us write them here. 1 2 3 4 5 6 and 7. Now we form the triplets. ये हो गया first, ये हो गया second and now this 2 is left out.
So is this number a perfect cube? Obviously not, क्योंकि यहाँ पर इस फैक्टर का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. We write it here. Here 2 is left after grouping the factors in groups of 3. Therefore, 128 is not a perfect cube. I hope it is very much clear to you all. We take the next number, it's 1000. Again we begin by finding the prime factorization of 1000. Write down the number, draw these lines, dividing by 2. 5s are 10 and 2 zeros, again by 2, 2 2s are 4, 5s are 10 and 0, again by 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 times 10. Now 125 is 5 cube, so we divide by 5. It will go 25 times, again 5 5s are, and then we have 5 1s are. Let us write it here. 1000, it is equal to 2 into 2 into 2, and we have 5 also 3 times, 5 into 5 into 5. Let us now form the triplets. 3 3 का group देखेंगे, and we are having both these factors in groups of 3. 2 का भी एक triplet बन रहा है और 5 का भी, इसलिए 1000 is a perfect cube. So we write it here. Here both the prime factors two and 5 are in triplets. Therefore, 1000 is a perfect cube. Got it? We have one more number, it's 100. So, we begin by finding its prime factorization. Write down the number, divide by 2. It will go 50 times, 25 times, and now by 5. 5 times, 5 ones are 5. So, we write it here, 100 is equal to 2 into 2 and 5 into 5. Now forming the triplets, we are unable to get any triplet. आप देखेंगे 2 का भी triplet नहीं बन रहा है, group of 3 नहीं बन पा रहा है, और ऐसे ही 5 का भी group of 3 हमें नहीं मिल रहा है. So what we write here, the prime factors 2 and 5 do not appear in groups of 3. So then, is this number 100 a perfect cube? No, it's not a perfect cube, because here the factors are not in groups of 3. So we write here 100 is not a perfect cube. Got it? Next we have this big number 46,656. Again first we find its prime factors. Write down the number and we draw the lines, dividing by 2. 2 times 3, 3, 2 times and 8 times 16. Again by 2. 1, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 6 are 12 and 4 times 8. Again by 2, 2 5s are 10, 8s are 16, 2 3s are 6 and 2 times 4. Again by 2, 2 2s are 4, 9s are 18, then we have 16 here. Again by 2, 2 1s are, 2 4s are 8, 5s are 10, 8s are 16. Again by 2, 7s are 14, 2 times and 9. Now we should divide by 3. 3 2s are 6, 3 4s are, 3 3s are. Again by 3, 81. Then continue from here. 3 27 times, 3 9 times, 3
3 times, and then in the end 3 one time. I hope you can see it. Now let us write these prime factors here. How many 2's are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 times 2. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And let us see how many 3's are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly 3, 3, 3, again 3, 3 and 3. So now let us try to form the triplets. ये हो गया first, second, third and fourth. So all the prime factors have been arranged in the form of triplet. And so is this number a perfect cube? Yes, it is. So let us write here. Here all the prime factors are in the form of a triplet. Therefore, this number 46,656 is a perfect cube. Okay, next we have this question number 2. Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. So here some numbers have been given and these numbers are not perfect cubes. तभी तो हमसे पूछा है कि इन नंबर्स को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए. So let us begin with the first number 243. First, the prime factorization of 243. We look towards it. Write down the number. It will go by 3. 3 8s are and then 1 time 3 and then 27. 3 9 times 3 3 times and then 3 1 time. So let us write here 243. It can be written as 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 and 5. Let us form the triplets. First triplet and this is the only one. आप देखेंगे ये इसका ट्रिपलेट हमें नहीं मिल पा रहा है. तो अब बताइए क्या ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल नहीं. और अब हम चाहते हैं कि इस नंबर को किसी एक और नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए. तो आप बताइए वो नंबर क्या होना चाहिए? हैव अ लुक. हमारे पास यहाँ पर 3 2 टाइम्स तो है. अगर अब एक 3 और आ जाए तो इसका भी ट्रिपलेट बन जाएगा और तब हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा. तो अब हमें 243 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? ऑब्वियसली वी शुड मल्टीप्लाई इट बाय 3 टू गेट वन मोर 3. Let us first write here 3 by 3 or 3 into 3 is left after grouping the 3's in triplets. Triplet में group करने के बाद 3 into 3 is left and therefore it is not a perfect cube. और अब हम चाहते हैं एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए. उसके लिए हमें इसको एक 3 और लेना होगा, उससे मल्टीप्लाई करना होगा. सो लेट अस राइट हियर टू गेट अ परफेक्ट क्यूब वी नीड वन मोर 3 and hence the smallest number by which 243 must be multiplied to get a perfect cube is 3. This is the answer. और एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. If we multiply 243 by 3, यहाँ पर 243 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. We were having 3 5 times और अब हम एक 3 ये और ले आए. So let us write it here and now have a look. मिल गए हमें दोनों ही ट्रिपलेट फॉर्म में और अब हम इजीली इसका मल्टीप्लाई करके आंसर ले सकते हैं. यू विल गेट इट इक्वल टू 729. सो 729 इज दैट परफेक्ट क्यूब नंबर विच वी वर लुकिंग फॉर. तो 243 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल रहा है. ओके, नेक्स्ट वी हैव 256. लेट अस फाइंड द प्राइम फैक्टर्स. Draw these lines dividing by 2 one time,
2 times and then 8. We get 64, then by 2, 32 times, then 16 times, 8 times, 4 times, 2 times, and in the end it goes by 1. 2 ones are 2. Let us write here the prime factorization of 256 is, how many 2's are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Let us form the triplets, first and second. Still this 2 into 2 is left. अब ये बच गया है. First we write here 2 into 2 is left after grouping the factors in triplets. और अब हम चाहते हैं कि इस नंबर को एक और नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए. अभी क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिपलेट हमें नहीं मिल रहा है तो 256 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. तो अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? ऑब्वियसली यहाँ पर एक 2 मिसिंग है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा और हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा. सो व्हाट वी राइट हियर, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब वी नीड वन मोर 2 and hence the smallest number by which 256 must be multiplied to get a perfect cube is 2. Okay, I hope it's clear and it's very easy. Next we have 72. So the prime factorization of 72 is, you will see it comes out equal to 2 into 2 into 2. This is 8 and 3 into 3. This is 9. 8 9s are 72. We can write the factors in this way also. Now have a look. This is in the triplet form but this is not. 3 का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है और इसलिए ये अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. The prime factor 3 does not appear in a group of 3. So 72 is not a perfect cube but we want to get a perfect cube by multiplying it by some number. और हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? Obviously 1 3 is missing here. तो एक 3 ले आएँ अगर हम मल्टीप्लाई करके तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा. सो वी राइट हियर, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब वी नीड वन मोर 3 and hence the smallest number by which 72 must be multiplied to get a perfect cube is 3. Okay, next we have 675. Again write down the number, draw these lines and we begin by which number? Let us add 7 and 5 12 and 6 18. So it's divisible by 3. We begin by 3. 3 2s are 6, 2s are 6 and 5 times 15. Again by 3. 7s are and then 5 times. Again by 3 it will go 25 times and now dividing by 5. 5 5s are, 5 1s are. So the prime factorization of 675 is given by 3 into 3 into 3 into 5 into 5. Now this is in the triplet form पर 5 का triplet नहीं बन रहा है तो अब the prime factor 5 here does not appear in a group of 3 और अब हम इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक ट्रिपलेट लाना चाहते हैं और फिर हम उससे एक परफेक्ट क्यूब लाना चाहते हैं. तो बताइए किससे करना चाहिए? ऑब्वियसली जिस फैक्टर का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है उसी से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए. तो एक 5 मिसिंग है एंड सो वी नीड वन मोर 5 टू फॉर्म अ ट्रिपलेट and accordingly to get a perfect cube number. So we write here, to get a perfect cube we need one more 5 and hence the smallest number by which 675 must be multiplied to get a perfect cube is 5. Okay, it's easy. Then we have 100. So first we find its prime factors and we know it's very easy. 2 times 50, then 25 times, then we divide by 5 times and then 5 ones are 5. So the prime factorization of 100 is
given by 2 into 2 and 5 into 5. Now both these factors are not in the triplet form. तो इसलिए 100 is not a perfect cube. And now we need some numbers. This time we need one more 2 and one more 5. We need both these numbers to get triplet form and accordingly to get a perfect cube. So the prime factors 2 and 5 here do not appear in groups of 3. So to get a perfect cube, we need one more 2 and 5. We need both of them, one more. And hence the smallest number by which 100 must be multiplied to get a perfect cube is 2 into 5. This is equal to 10. Got it? हमें एक 2 भी चाहिए और एक 5 भी चाहिए, दोनों का ही ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है. तो 2 into 5 we should multiply it by 10 and then we will get a perfect cube. And we know if we multiply 100 by 10 we get 1000 and obviously it is equal to 10 cube. It is a cube number or a perfect cube. Next we have question 3. Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. अब फिर से हमें कुछ नंबर्स दिए हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है और हमसे पूछ रहे हैं कि इन नंबर्स को कौन से नंबर से डिवाइड करें जिससे हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए. So again we begin by the first number 81. First we find its prime factors. Divide by 3, it will go 27 times, then 9 times, then 3 times, then 1 time. So the prime factorization of 81, it is given by 3 into 3 into 3 into 3. Form the triplet. This is the only triplet. आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 triplet form में नहीं मिल रहा है. We write it here. Here 3 is left after grouping the factors in triplets. After grouping the factors in triplets. तो अब हमें 81 को किससे डिवाइड करना चाहिए जिससे कि हमें एक ट्रिपलेट मिल जाए और अकॉर्डिंगली एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए. जस्ट हैव अ लुक. दिस 3 इट इज़ एन एक्स्ट्रा नंबर. अगर ये 3 को रिमूव कर दें बाय डिवीजन, वी शुड डिवाइड बाय 3. इफ़ वी डिवाइड बाय 3 देन दिस 3 विल बी कैंसल्ड. ये रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और तब हमें ये ट्रिपलेट फॉर्म बचा हुआ मिलेगा और उसी के साथ साथ एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा. सो व्हाट वी राइट हियर, to get a perfect cube we need to divide 81 by 3 and then have a look. अगर हम 81 को 3 से डिवाइड करें और साथ ही साथ यहाँ पर 81 के फैक्टर्स लिख लेते हैं हम और इसको भी हम 3 से डिवाइड करें बोथ ऑन LHS एंड RHS. यहाँ पर LHS और RHS दोनों में ही हमने 3 से डिवाइड किया है. तो ये ट्रिपलेट फॉर्म है और यहाँ पर ये 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा 3 यहाँ से रिमूव हो गया और अब हमें मिलेगा नंबर 27 इफ़ वी डिवाइड 81 बाय 3. और क्योंकि ये ट्रिपलेट फॉर्म में है सो ऑब्वियसली इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब एंड वी नो 27 इज़ 3 क्यूब. सो हियर 27 इज़ अ परफेक्ट क्यूब एंड हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 must be divided to get a perfect cube is 3. Okay, next we have 128. Again we write the prime factors. Find it. Dividing by 2 it will go 64 times, 32 times, 16 times, 8 times, then we have 4 times, 2 times and then 1 time. Let us write here the prime factorization of 128. It is how many 2's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Form the triplets. ये 2 ट्रिपलेट तो मिल रहे हैं हमें पर ये 2 तो रिमेनिंग है और ये एक्स्ट्रा नंबर है तो अब हमें 128 को इस एक्स्ट्रा नंबर 2 से डिवाइड करके एक परफेक्ट क्यूब नंबर लाना चाहिए. We write here
2 is left after grouping the factors in ट्रिपलेट्स फॉर्म में ग्रुपिंग करने पर ये 2 बच गया है. नाउ व्हाट नेक्स्ट? टू गेट अ परफेक्ट क्यूब वी नीड टू डिवाइड 128 बाय दिस नंबर 2. सो देन व्हाट डू वी सी? 128 को 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ हम लिखते हैं 128 के फैक्टर्स. देखिए आप, वी आर हैविंग 7 times 2. सो 1 2 3 4 5 6 and 7. और अब हम RHS में भी 2 से डिवाइड करें तो ये तो है ट्रिपलेट फॉर्म में, ये भी ट्रिपलेट फॉर्म में, और ये एक्स्ट्रा 2 यहाँ से कैंसिल हो गया और हमें मिल गया ट्रिपलेट फॉर्म. और आप देखेंगे इफ़ वी डिवाइड बाय 2 यू विल गेट इट इक्वल टू 64 विच इज़ इक्वल टू 4 क्यूब. एंड सो 64 इज़ देन अ परफेक्ट क्यूब. Hence the smallest number by which 128 must be divided to get a perfect cube is 2. This is the answer. Next we have 135. Write down the number, divide by 5. It will go 2 times and then 7 times. Now this is divisible by 3 9 times, 3 3s are and 3 1s are. So the prime factorization of 135 is given by 5 into 3 into 3 into 3. Form the triplet. What do you see? This 5 has been left out and so this number is not a perfect cube. Let us first write it here. The prime factor five does not appear in group of 3. Therefore, 135 is not a perfect cube and now we want to divide it by some number so that we get a perfect cube. और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 5 एक्स्ट्रा नंबर है तो अगर हम 135 को 5 से डिवाइड कर दें तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा एक ट्रिपलेट और उसी के साथ साथ एक परफेक्ट क्यूब. सो वी राइट हियर to get a perfect cube we need to divide 135 by 5 and in doing this we get it 135 upon 5 और यहाँ पर अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये एक ट्रिपलेट मिल गया और दिस इज इक्वल टू 27 विच इज इक्वल टू 3 क्यूब. एंड सो 27 इज अ परफेक्ट क्यूब. हमें डिवीजन के बाद एक परफेक्ट क्यूब मिल रहा है. Hence the smallest number by which 135 must be divided to get a perfect cube is 5. Okay, then we have number 192. Let us find its prime factors. Draw a vertical line, horizontal line dividing by 2. 2 9s are 18 and 6 times. Again by 2, 4 times and 8 times. 2 24 times, 2 12 times, 2 6 times, 2 3 times and then 3 1s are 3. Let us write the prime factorization of 192. It is given by how many 2s are there? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 and we have one more 3. Form the triplets. So we are having 2 triplets but here this number 3 has been left out and so this is an extra number which should be divided and removed. Let us write here. Here the prime factor 3 does not appear in group of 3. So we should divide 192 by this extra number 3
and get a perfect cube. We write here, to get a perfect cube we need to divide 192 by 3, and if we divide it by 3, what we have now? We were having 2 6 times, हम 192 के प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं, एंड इन द एंड वी वर हैविंग 3, और अब हम 3 से डिवाइड करें तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, देखिए ये एक्स्ट्रा नंबर रिमूव हो गया अब, और हमारे पास बच गए 2 ट्रिपलेट्स, और ये हमें देगा इक्वल टू 64. And now we can see that 64 is a perfect cube because it is equal to 4 cube. Hence the smallest natural number by which 192 must be divided to get a perfect cube is 3. 3 से divide किया और एक perfect cube हमें मिल गया. Next we have 704. Let us find its prime factors. Write down the number, divide by 2. 3 times, 5 times, 2 times. Then by 2. 2 ones are 2, 7s are 14, 6s are 12. 2 8s are 16, 8s are 16. 2 44 times. Then 2 22 times. 2 11 times, and 11 ones are 11. Right here, the prime factorization of 704 is given by, we are having 1 2 3 4 5 6 times 2. 1 2 3 4 5 and 6. Then we have 11 in the end. Form the triplets. 2 triplets are there and 11 has been left out. We write here. Here the prime factor 11 does not appear in group of 3. Therefore 704 is not a perfect cube. और अब हम चाहते हैं कि इसे किसी नंबर से डिवाइड करें जिससे एक perfect cube मिल जाए, और वो नंबर है ये 11 जो कि एक्स्ट्रा है यहाँ पर. So let us divide this by 11. To get a perfect cube we need to divide 704 by 11. And if we do this, what do we get? हम 704 के अगर फैक्टर्स भी लिखें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये 11 जो एक्स्ट्रा नंबर है, 11 से डिवाइड करने पर ये कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गए ये 2 ट्रिपलेट्स, और इससे हमें डिवाइड करने पर नंबर मिल रहा है 64 अगर हम 704 को 11 से डिवाइड करें. और ऑब्वियसली 64 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, इट इज़ इक्वल टू 4 क्यूब. And hence the smallest natural number by which 704 must be divided to get a perfect cube is 11. Okay. Next we have question 4. Parikshit makes a cuboid of plasticine of sides 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many such cuboids will he need to form a cube? परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया जिसकी साइड्स ये दी हुई हैं हमें, और अब ऐसे ही कुछ क्यूबॉइड्स को यूज़ करते हुए, एक के ऊपर एक अरेंज करते हुए, परीक्षित wants to make one cube. So how many such cuboids will he need to make such a cube? This is the question. First we find the volume of this cuboid that he has made. We begin the solution. Volume of the cuboid. You know its formula, it is given by length into breadth into height. So length is 5 centimeters, then we have 2 centimeters into again 5 centimeters. This if you multiply, you will get it 2 into 5 into 5, and this is equal to 50 centimeter cube. आप देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर भी 3 times है, so we have the power 3 on this centimeter cube. Okay. Now just have a look at this number 50. क्या ये एक perfect cube number है? आप देखेंगे इसके factors ये लिखे हुए हैं, और ना तो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और ना ही 5 का, तो ये एक क्यूब नंबर नहीं है. हम चाहते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हम एक क्यूब ही तो बनाना चाहते हैं. और वो कैसे होगा? यहाँ पर आप देखिए 2 बार 2 मिसिंग है, 2 times 2 and 1 5 इज मिसिंग. अगर हमें 2 times 2 और 1 time 5 मिल जाए तो हमें एक क्यूब नंबर मिल जाएगा.
Let us write it here. To get a perfect cube, we need to multiply 50 by 2 times 2 and 1 times 5, and this is equal to 2 5s are 10 and into 2 it's 20. So to get a perfect cube we need to multiply this number 50 by 20, and so the number of cuboids required to get a cube is 20. देखिए आप हमसे यही तो पूछा है कि कितने क्यूबॉइड्स लिए जाएं जिससे कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, यही क्वेश्चन है. तो हम अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए आप 50 इंटू 20 करेंगे अगर हम, तो इसके फैक्टर्स तो हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 और इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5. तो इससे 2 का भी ट्रिपलेट बन गया और 5 का भी ट्रिपलेट बन गया और हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा. तो इसलिए हमें कितने क्यूबॉइड्स चाहिए इस वॉल्यूम के? वी नीड 20 such cuboids. So the answer is the number of cuboids required to get a cube is 20. This is the answer. So this was exercise 7.1. I hope it is clear to you. In our next class, we will be dealing with cube roots. Till then, practice these questions and have fun. Goodbye.